Hello everyone. Welcome to Kids English online classes. We are going to continue the chapter number 2, that is in morning dew. Okay. We have already read the poem in morning dew. It's on page number 8. Okay. Page number 8 of your textbook. Sorry, page number 11 of your textbook. The name of the poem is In Morning Dew, and we are going to start with the exercise. Okay, so A2, answer these questions. What does the scarecrow do in the morning? In the morning, the scarecrow spies on the monkeys and the porcupines. See, we have already done the poems. So today in this lecture, I'm going to give you the exercise which you have to copy in your CW. ये लेक्चर में हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी कॉपी करना है और आपकी CW में. ओके, एंड आई एम रीडिंग फॉर यू. मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ ईच एंड एवरी वर्ड. सो आपको जो भी वर्ड नहीं समझ रहा आप वो वर्ड पर फोकस करें. What does the scarecrow do in the morning? In the morning, the scarecrow spies on the monkeys and the porcupine. Second one, what does the scarecrow see? The scarecrow sees everything around him except his own shadow. What are the questions that bother him? The scarecrow does not know which season will come next and where seasons come from. These questions bother him. Fourth one, what does he know about the seasons? The scarecrow knows that winter is freezing and summer is hot. Fifth, what does the scarecrow do to keep questions out and answers in? The scarecrow bolts her upper story's door, which means his head. Next, guess these idioms and write their meaning. So, what do you mean by idioms? Idioms का मतलब क्या रहता है? Idioms means a group of words. Idioms मतलब I'm writing the meaning of idiom here. IDIOMS. Idioms means group of word that by usage acquires the meaning that is not usually literal. इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक ऐसी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट की मीनिंग्स बताते हैं. लाइक कम एंड गो के बीच में जो पार्ट है तो उसे कहा जाता आइडियम्स, है ना. ओके, कम एंड गो, आए और गए. कम का मतलब आना, गो का मतलब जाना. तो उसके बीच में जो वर्ड रहेगा उसे कहा जाता है आइडियम्स. उसके बीच में जो टाइम है, जो गेस्ट आए फिर बैठे फिर वो चले गए, तो ये जो बैठे या वेट करे या जो भी है तो उसे कहा जाता है आइडियम. सो आइडियम, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. वन शुड नेवर फील होपलेस बिकॉज डिफिकल्ट टाइम्स ऑलवेज लीड टू बेटर डेज. अब ये इमेज थी आपको क्लाउड की और उस पर सिल्वर लाइनिंग्स है. इसका मतलब क्या है कि ये बताना चाह रहा कि कभी भी किसी ने होपलेस फील नहीं करना, मतलब उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए. और इसके मतलब हमेशा डिफिकल्ट टाइम्स के बाद ही अच्छा टाइम, अच्छे डेज आते करके. नेक्स्ट इज टी, कप ऑफ टी, थंडर एंड वेपर. स्टोम इन अ टी कप. हुला बेलो ओवर अ ट्राइबल थिंग. मतलब कि ठंड मतलब रेनी सीजन में कप ऑफ टी पी रहे. इसका मतलब ये हुआ. क्लाउड्स ऑन क्लाउड 9 मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी. नेक्स्ट वन, कम रेन एंड समर. कम रेन और शाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर. मतलब कभी रेन हो रही कभी सनशाइन हो रहा, तो इसे कहा जाता है कि ये वेदर से रिलेटेड नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वेरी हैवी रेन. मतलब अम्ब्रेला और कैट्स एंड डॉग्स है तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही. स्लीपिंग लाइक अ लॉग,
डीप मोशनलेस स्लीप, मतलब अगर कोई ऐसा बिना हिले डुले सो रहा तो उसे कहा जाता स्लीपिंग लाइक अ लॉग. ओके, next is fill in the blank using compound words from the boxes. Crows aren't afraid of scarecrow on a dash night, on a full moon night. So the answer will be full moon. Okay, FULL full, MWN moon, full moon night. Shreya is not allowed to eat ice cream. Okay, Shreya क्या नहीं खा सकती? Ice cream. The dash of children is in orphanage should not be neglected. The well-being of children, मतलब उनकी तबीयत कैसी है वो कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए. The scarecrow does not like to travel by a school bus. The scarecrow is dash among the animals of the field well known. WELL known. Well known among the animals of the field. Underline the preposition in the sentences. Identify their types. I broke the wall with a hammer. With a hammer. यहाँ पे क्या हुआ? with मतलब हैमर के जरिए. तो हैमर क्या हुआ? आपका एजेंट हुआ, जिसका जरिया जिसे कहते हैं. शी लिव्स इन मुंबई विथ हर डॉटर. डॉटर क्या हुआ? ये रिलेशन हुआ. मदर फादर डॉटर, इनका क्या हुआ? रिलेशन हुआ. लीजो ब्रीड एंड द आर्मी ऑफ मॉस्किटो इज रिटन बाय जुनेद याहिया. सो इट्स एन ये इमेजिनरी आर्मी ऑफ मॉस्किटो. ये क्या है? मॉस्किटोज के आर्मी के बारे में एक इमेजिनरी कहानी लिखी हुई. तो इट इज एजेंट. I feel hopeless without my mother's present. Relation. This door opened with a magical key. Agent. So key, with a magical key is a agent. Fill in the blanks using preposition. I shall give you the invitation by post. Preposition क्या आएगा? Invitation by post. The room on the roof is written by Ruskin Bond. It seemed the chest had been broken dash a hammer with a hammer. He should not go out in the summer without a hat. Okay, this is known as preposition. जो sentence को complete कर रहा. Always water the plant with a hose pipe. With a hose pipe. Okay. Now next is listen to the poem Autumn Fires by R.L. Stevenson and fill in the blanks. Okay, I will read the poem for you and you will fill in the blanks. You will fill the blanks. Okay. In the other gardens and all up the vale, from the autumn bonfires, see the smoke trail. Pleasant summer over and all the summer flowers, the red fire blaze, the grey smoke towers. Sing a song of season, something bright in all, flowers in the summer, fires in the fall. Okay, I will read the poem again for you. In the other gardens and all up the vale, from the autumn bonfires, see the smoke trails. Pleasant summer over and all the summer flowers, the red fire blazes, the green smoke towers. Sing a song of season, something bright in all, flowers in the summer, fires in the fall. Okay, so in the other gardens and all of the vale, from the autumn bonfire, see the smoke trails. Pleasant summer over and all the summer flowers, the red fire blazes,
the grey smoke towers, sing a song of season, something bright in all, flowers in summer, fires in the fall. Okay, so this is your poem. In the homework you will learn and write A2, B1, B2, C1, C2, C3 and D. That is your poem. Okay, 3 times, and you will learn and write the poem that is In the Morning Dew. In Morning Dew 2 times. That's it. This is your homework. Learn and write for the exams. That's it for today. See you in the next class. Thank you and have a nice time.